maximum extent to the Viksit Bharat. Thank you very much. Honorable Chancellor Sir and all the dignitaries. Under the thematic area, Empower Indians, Honorable Prime Minister has given us a very important responsibility of catching the youths and catching the youth minds. Students in the age group of 18-23 is our population as far as higher education is concerned. The first thing we will have to do is, we will have to listen to them, and Shivaji University has already follow the instruction of Ministry of Education and my GOV. Through a well-defined questionnaire, the first thing is we will have to listen to them, and we will have to prepare a perspective plan for the next 25 years, the phase-wise perspective plan. When it comes to empower Indians, essentially, we will have to empower our youths. If we empower the youths, the nation will be empowered. विद्यार्थी ही युवा शक्ती यांच्या पुढील आव्हान आहे आणि ही युवा शक्ती काय करू शकते महाविद्यालयाच्या माध्यमातून आणि विद्यापीठाच्या माध्यमातून हा युवक कशा पद्धतीने पुढे गेला याच्या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर याच्या संदर्भात आपल्याला जे काही सुचव असतील, काही सूचना असतील, काही आपण कॉन्ट्रीब्यूट करू इच्छित असाल तर आपण कागदावर लिहून द्या किंवा आपल्याला काही बोलता येत असेल तर आपण त्या ठिकाणी बोला. नसेल तुम्हाला कागदावर लिहून देणं तर आता सुद्धा तुम्ही इथे तुमच्या बाईटच्या फॉर्म मध्ये तुमचं जे सजेशन्स आहे किंवा या प्रकल्प अंतर्गत आता आपण घेतलेलं आहे तर त्या अंतर्गत आपण आपलं म्हणणं त्या ठिकाणी मांडू शकता अगदी थोडक्यामध्ये. Professional University is committed to empower. We are adopting a few principles while adhering to the pedagogy of skill development. The first is collaboration with industry. The second is deriving new programs as per the industry demands. Third is community engagement, empowering the underprivileged and the girls students. The fourth one is teaching life coping skills and value systems to the youth. Where the students are empowered through teaching them principles of innovation and encouraging them to become entrepreneurs. Let's all adhere to Viksit Bharat, Atmanirbhar Bharat and empower the Indians of 2047. Thank you so much. Honorable Chancellor Sir, my learned colleagues on and off the dais, namaskar to everybody. When we talk of empowered Indians, what comes to my mind is educated Indians. And we as a university, educated Indians for Viksit Bharat 2047. You know, when we talk of empowered Indians, a historic incident comes to my mind. It was also popularized by a Hindi movie, Time 4th to 7th December 1971. Post Longowala. Major Kuldeep Singh Chandpuri, with his one company of 120 soldiers, had to face two brigades of Pakistanis who were 3,000 soldiers and 40 tanks. Now, Major Chandpuri was given the option, hold on or go back. The choice was given to him. Freedom was on to the coast to face the Pakistanis. And what happened? All of us know that he won this crucial battle. Indian casualties were only 2, Pakistani casualties were 1,200 and 36
stands lost. Now, the lesson of the story is that he was given the freedom, he was empowered. So the empowerment which led to the victory, I think the underlying thing was the passion and the ownership that was given to him. He had the passion, he was given the ownership, he took the ownership, and therefore we won this crucial battle. So similarly, I think we should inculcate of ownership in our students. We need to make them aware that what is the future, where do we want to be, where are we right now, and what is the gap. So this can be done in various verticals. We may be talking of infrastructure, we may be talking of logistics, we may be talking of health, we may be talking of education. So in all these verticals, we need to empower our students, we need to have their early participation in all these projects, and we need to give them ownership. We give them, so whatever the goals that our country has set, Thank you. we can, Thank you so much. yeah. So we can have work in various verticals and empower our students. So how we can empower our students? By giving them physical platforms, by giving them collaborative opportunities, by giving them rewards, recognitions. So I think we can do this. For example, at our university, our food and nutrition department has taken up a challenge to make India diabetes free. So whatever little they can do, they are working towards this goal. Last 2 days back, we had a seminar and a workshop on this, making people aware of diabetes and how to get free from diabetes. So similarly, we can work in the area of, we are working in the area of EV manufacturing. So what can be done there? So sky is the limit. I think empowered Indians is educated Indians, and we will try our best to work towards this goal. Thank you very much. First subject is over here, and thank you so much for your presentation and excellent results. Thank you so much. और मैं अभी आमंत्रित करना चाहता हूँ मुंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी को, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रशांत बुखारी जी को, वाइस चांसलर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुरेश गोसावी जी को, वाइस चांसलर NMIMS मुंबई के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर रमेश भट्ट जी को, डॉक्टर विजय देशपांडे जी वाइस चांसलर जी के डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, और प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा वाइस चांसलर छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी पनवेल। आप सब लोगों को मेरी आदरपूर्वक रिक्वेस्ट Chancellor sir, all my esteemed colleagues on the dais, out of the dais. The theme for this particular presentation is given thriving and emerge sustainable Indian economy. This is one of the themes which Honorable Prime Minister has spoken in his address. As we are well aware, we are now 5th largest economy across globe, and we are planning to achieve the target defined. And at the same time, while connecting it with sustainability, we would like to have achievement of carbon neutral emissions, net zero carbon emissions by 2070. Now we are well aware, recently the United Nations has given, like the World Bank of the United Nations has already given a report on Indian economy, wherein we observe that India is the fastest growing economy right now with the rate GDP around 7.6, which is largest, second largest among G20 countries, almost double than the growing economies across the world. And of course, when you talk about projected, well, China is projected somewhere in between 3 to 4%. So that's talks about the strength of our economy. Connected with this sustainability plan, भारत सरकार ने पंचामृत एक सस्टेनेबिलिटी का एक्शन प्लान लिया है. पंचामृत के जो 5 की टारगेट है कि वन ऑफ द की फर्स्ट टारगेट इज टू डेवलप non-fossil fuel energy capacity of the order of 500 gigawatt by 2030.
then we would like to see that 50% of the energy will be available from renewable energy. The carbon emission का reduction होगा almost by 1 million ton carbon, and net zero emissions target by 2070 अचीव होगा. तो इसके लिए जो हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की भी जो जवाबदारी है, विश्वविद्यालय की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी हमारा कैंपस कार्बन न्यूट्रल करें. So we at University of Mumbai has already initiated the actions in this that from this point of view carbon neutral campus by 2030. So net positive water supply हो, complete waste elimination हो, water का recycle complete हो, और जो campus है, that campus will be completely covered with solar rooftop plant. ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव 20,000 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट है. तो वी एज ए यूनिवर्सिटी आर टेकिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन एज वन ऑफ द रिसर्च एरिया एंड वी लाइक टू सी दैट पार्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी वुड बी मेड बाय ग्रीन हाइड्रोजन. आई विल पास ऑन to my next colleague for presentation on this thing. Thank you, Dr. Kulkarni. सम्माननीय महामंत्री राज्यपाल महोदय, मंत्री महोदय श्री हर्षवर्धन जी, मैडम श्वेता जी और मेरे स्टीम कलीग्स. थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए मेरा विद्यापीठ जिस क्षेत्र में है, गढ़चिरौली है, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप के कई सारे लोग हैं. मेरी यूनिवर्सिटी इन्हीं के लिए काम करती है और विकसित भारत की इकोनॉमी तब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी जब तक इन लोगों को हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित न करें. मेरा विद्यापीठ पहले से ही इन प्रयासों में लगा है और इसके बाद इन प्रयासों को और पुरजोर और मजबूत करने की कोशिश मेरा विद्यापीठ करेगा. मेरा विद्यापीठ फिलहाल में विद्यापीठ अपने गावात और एकल प्रकल्प चलाता है, जिसमें से जो टेलेंडर्स है, मतलब जो अभी तक हमारे विकास की धारा में नहीं आए हैं, उनके वेजेस बढ़ाने के काम में लगा हुआ है. क्योंकि ये लोगों के वेजेस बढ़ेंगे, इन लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी. और आज जिस हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे 2030 तक, ये लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना 2030 के पहले ही कंप्लीट हो जाए. इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी ने हर सेमेस्टर में एक स्किल कोर्स और उस स्किल कोर्स के आधारित उनको उद्योग देने की योजना बनाई है. उसके लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाई है और उसको ही हम आगे बढ़ा के इन लोगों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं. और इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो भी प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, उन प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन हमारी यूनिवर्सिटी करेगी. और इस प्रयासों में से आज जो हमारा 14% का GER है वो भी बढ़ेगा. और GER बढ़ने के बाद एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जहाँ तक अभी तक हायर एजुकेशन पहुंचा नहीं है, वहां तक हम हायर एजुकेशन मीनिंगफुली पहुंचाएंगे, स्किल के थ्रू पहुंचाएंगे, इनके वेजेस बढ़ाएंगे और इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी लाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Namaskar, Honorable Chancellor Sir and my colleagues. As everyone knows that Bharat is going through energy transformation, digital transformation and AI transformation. As far as Savitribai Phule University is concerned, we are looking for the Viksit Bharat 2047 through energy independence and inclusive growth of rural economy, wherein we are fortunate to have and blessed to have ample land, sunshine and agriculture. We need to really look for the Amrit Kaal and mechanizing the biomanufacturing, bioeconomic technology, wherein we can really go for net zero. If we take the example of, okay, like if we use 2 lakhs of ton of rice straw and which can generate 3 crore liters of ethanol. So we have to really go for bioeconomy, biomanufacturing technology, which can also give the manpower of 1 lakh farmers and 1,500 jobs. And as
as far as the CO2 emission is concerned, okay, like 320,000 metric tons CO2 can be, conserved, which is equivalent to 63,000 cars on road. Okay, so bioeconomy as an important sector to really go for the sustainable technology. Thank you. माननीय राज्यपाल एवं विद्वान, हमें हमारी अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना है कि संपन्न भारत का निर्माण हो सके, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि टिकाऊ हो, सतत हो, और इसके लिए हमें अपने विद्यार्थियों को एजुकेट करना होगा और साथ ही ऐसे पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि अब पर्यावरण संरक्षण आवश्यक हो गया है। वातावरण में जो टेम्परेचर का बढ़ाव, सी लेवल का बढ़ना, ये सब कुछ हमें ऐसा इंगित कर रहा है कि हम आगे के लिए जो विकास के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा न हो कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए कुछ नुकसान पहुंचाते हुए करें। जैव विविधता की सुरक्षा बहुत आवश्यक हो गया है। संसाधन को भी विकसित करना होगा, चाहे वो फूड का हो, चाहे वाटर का हो, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ऊर्जा संरक्षण प्राथमिकता से अपने इंस्टीट्यूशन में करें, बच्चों को भी सिखाएं और ऐसे ही पूरे देश में वातावरण बने। ग्रीन एनर्जी पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। वन्य जीव की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है और उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, इसलिए वन संरक्षण की भी हमको जरूरत है। अन्यथा ये सब कुछ धीरे धीरे विलुप्त हो जाए तो फिर भावी पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार से हम प्रकृति का संरक्षण करते हुए विकास करें, यह बात हम विद्यार्थियों को प्रारंभ से बताएं, उनमें एक संस्कार पैदा करें, तो स्वाभाविक है कि वे अपनी प्रगति को, अपने अर्थव्यवस्था के जो टिकाऊपन है, वो एजुकेट होंगे और हमारा भी पाठ्यक्रम ऐसे होना चाहिए। तब हम सचमुच में एक संपन्न भारत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा भारत बनाएंगे जो भविष्य में भी हम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य के लिए हम निरंतर विकास की गति को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। Honorable Governor Sir, dignitaries, and good morning to all of you. For Viksit Bharat at the rate 2047, NITI Aayog has provided us under the leadership of guidelines and goals, which translates into increasing the per capita income 8 times by 2047, increasing the export growth significantly, almost to the tune of $8.67 trillion, and also boosting the investments rupees 1,273 trillion rupees. Now, most of these quantitative figures have to go up by 8 times. And our university, NNMS University, which is multi-centric and providing the manpower, which is, I think, one of the very important imperatives of this growth, almost matching the requirements in terms of the number of students in times to come. And needless to mention that NMMS University also focuses on research as one of the areas intensively, which also helps us to get the accreditations and rankings globally, so that the manpower which comes out of the NMMS University is usefully and effectively
achievements we have. We have achieved international global accreditations of ASACB, ABET accreditations, and also made the mark in the FT ranking, UK global FT ranking for our schools. And in view of this, we aim to look at and take this forward, this vision, in terms of 3 important points. One is that producing the global leadership through our education, remaining the ESG and sustainable development goals sensitive, so that we make sure that we are growing in the skilled professional manpower with character. What Prime Minister Modi ji said, that all the students need to have a good character, and also to ensure that our research initiatives help us to understand the complex problems and make sure that we are able to provide the effective solutions to all these problems in times to come. Thank you. Honorable Governor Sir, all the dignitaries on the dais and off the dais, I think on this occasion when we are talking of 2047, we should be not learning so much from the past, but it is rather important that we learn from the future. At Ajit University, we envision a 5th generation is technology-led for economic and social development of the country. Naturally, as my colleague just now said, we will have to make things 8 times, and for that just catching up is not going to suffice. And therefore, we need to leap, which means adopting new or different approach, as well as leapfrog, that is skip a generation and adopt a totally new model. And that's what at the university we are trying to do. And therefore, we have 3 goals that we have set in front of us. The first is an entrepreneurial university, which is not as an extended add-on or something, but rather ownership of an entrepreneurial paradigm across the university. Giving the focus on the core or the theory, because in all this discussion that is happening, we also have to understand that we are in a VUCA world, and in such a world, the knowledge fundamentals are going to be of critical importance than the other frills that we go through. And third is the social transition, that is to achieve a harmonious society and an enlightened individual who could think and reason, compare and discern. Finally, for a word for private higher education, naturally education is for human capacity development for sure, but private higher education has also been a major economic contributor, as 4% to the GDP, and it could contribute up to 9% of the GDP if provided sufficient leeway, sufficient policy and other intervention, and it could also help us to achieve jobs. More than 8 million jobs could be created by private higher education alone, as well as more than 75,000 crore capital investment. Thank you. Thank you. Thank you, panelists. आप लोगों ने थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। मैं आपका आभारी हूँ। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने हमें सबको कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। And I would like to invite the Director of Indian Institute of Technology, Professor Subhashish Chaudhary, Vice Chancellor, COEP, Technological University, Dr. Agashe, Vice Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar, Technological University, Lunere, Dr. Karvari Kare, Dr. Vijay Maheshwari, Vice Chancellor, Kaveri Mahinabel Chaudhary, North Maharashtra University, Dr. Rajneesh Kamath, Vice Chancellor, Homi Bhabha State University, Mumbai, and Dr. P.V. Ramanujan, founder IIM. Hello. आप सभी महानुभावों को एक छोटा सा अनुरोध है, राष्ट्रवंश की राज्य भाषा का आप प्रयोग करें। Innovation, science and technology इस विषय पर मंच पर उपस्थित महानुभाव अपने विचार व्यक्त करेंगे।
Professor Subhash Chaudhary I think before I start, let me put it like two premises to the Honorable Prime Minister said that there's 25 years remaining. What does it mean? It means those students who are graduating today, they're going to be under age group around 50. And if you look at tomorrow's and all that top level people, they have to drive the Indian economy and maybe how we go into the global. Second aspect is that education has been one of the greatest leveler in terms of providing the enabling aspects of socio-economic development. Now with that in mind, because we are all educationists here, let me put it up something, right? That typically the R&D and the innovation is not in all this, so many, like 1,000 universities here. It's limited to very few. We need to spread. We need the scale to see that everybody has the opportunity and then people today. So we have to look for them, their growth. That's in mind. And typically here we talk about Jugaad, which is good, but it's not good enough for 2047. We have to go beyond that. Or empower the way that entrepreneurial ecosystem that drives the Indian economy today. That is very, very essential. We need to have the higher education also has to transform. Today there's a lot of rote learning. We have to take it beyond that. We have to look at how to scale innovation. That's education. I'll take 30 more seconds. Like for example, IIT Bombay, in the pitch book if you go, we have placed 17 globally in terms of what our alumni, which is actually a product of our system, they have done. First is of course Stanford University. So they have like $80 billion, that's what they generated. IIT Bombay alumni is about $20 billion globally. So we need all these universities, everybody to come forward to see that how we can actually reach to that level. We'll be very happy to discuss and work together. And finally, I must say that the whole purpose of the Honorable Minister saying that not thousands, but millions of flowers should bloom. And that's what we need to work together. Thank you so much. All academicians, I've come here to pronounce the commitment of COEP Technological University, 170 years old institute of this country, to make sure that the vision which our Prime Minister has put forward as Viksit Bharat at 2047 by two ways. One is, we will ensure that our students will now get involved into developing global technologies, and because of which the Viksit Bharat at 2047 can be achieved. The second thing which we will be doing is more entrepreneurs while making sure that NEP will comply all such things. And the last thing, which is very, very important, we will ensure that financial arrogance and human arrogance while achieving this goal. Thank you so much. Namaste. Honorable Chancellor Sir and all the dignitaries present over here. We at KBC NME Jalgaon propose a 5-pronged strategy as our contribution towards realizing the dream of Viksit Bharat at 2047. Number one is we need to shift our focus from problems that can be solved to problems that need to be solved, and we propose that we'll identify a certain number of local problems, regional problems, be it social, industrial, commercial, or agricultural, and using our expertise and resource, solve them. That we identified a couple of areas where we have built up core competence in the area of research, develop them so that we become globally visible. Third, to work towards developing the cognitive capacities of the students through education using appropriate pedagogy,
We will encourage students to participate in ideation competition. We will develop a robust, innovation ecosystem and identify innovators. They will be promoted, they will be mentored. Fourth, we will put a lot of emphasis on skilling, reskilling and upskilling. We will make skilling what you can say, inseparable part of our curriculum. We will basically identify this. Flexible accordingly. And fifth, because education is a tool, probably the most powerful tool to realize this particular dream of Viksit Bharat, we need to invest in the educational infrastructure, resources, including human resource. So our university will try to do that and contribute towards Viksit Bharat 2047. Thank you very much. Honorable Governor, sir, and friends in the audience. I represent perhaps the youngest university in Maharashtra. We were formed as ITM Skills University in December 2022. So we are just about 11 months old. And has many other campuses. I am not here to tell you about what we want to do or what we hope to do. As our Prime Minister said, I want to offer, through the office of the Chancellor of the State Education System, Honorable Governor Sir, here, a gift of great value to the state education system in both higher and training and skills and everything. We have developed fully locally, fully indigenized, online technical education program called as Upgrade.in. This program launched students studying in all aspects for none of the software industry, from all kinds of languages to the latest generative large language models, AI and ML and everything. We have also, and this platform, we are not restricting to technology. This year, coming year in 24, we'll start offering healthcare education, and later in some specialized fields like automation, industrial manufacturing, product design and other fields will be in 2025. We hope to reach 5 million students in 3 years and 10 million students in 10 years. To develop our own learning management system and our own video conferencing system. As you are aware, the data storage laws say that when you use such facilities, the data has to remain in India. So we developed a platform called LISA, which has exclusively used by NPCI and Raymond's and 20 other corporates. Both these platforms I want to offer absolutely free of cost to the state university system, that they can, all their students can access the Let's Upgrade Technical Education online platform, as well as use the learning management system called LISA. And our Pro-Vice Chancellor, Dr. Lakshmi Mohan, kindly stand up so that people can identify you. During the lunch period, please approach them and they will give you the necessary particulars. Thank you very much for this opportunity to serve this state. Thank you, sir. नमस्कार, आदरणीय राज्यपाल महोदय सर, मंत्री महोदय, राजभवनचे सर्व सन्मान्य अधिकारी, माझे कलिग आणि मित्रमैत्रिणींनो, मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लुधियाना चे रिप्रेझेंटेशन करतो. हे विद्यापीठ महाराष्ट्राचं तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आहे आणि विद्याशाखेचा अभ्यास केला जातो. भारत विजन 2000 मान्यमध्ये सर्वांनी जे सुधार केलं त्याप्रमाणे आम्ही काही विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाकडून यावर्षी NEP 2020चा पुनर्विचार करून सुरुवात केली, ज्यामध्ये विशेषतः ज्या टॉप टेक्नॉलॉजी जगातल्या आहेत, ज्याची जगाला काही भारताला गरज असतात, मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, जनरेटिव्ह AI, मशीन लर्निंग, IoT, 6G आणि क्वांटम कम्प्युटिंग. सांगायला आनंद वाटेल की IIT मुंबई आणि आयसर बरोबर आम्ही
लवकरच या करार समोर येतो. विशेष म्हणजे आमच्या विद्यापीठाच्या लोगोमध्ये एक आमचा स्लोगन आहे, तंत्रज्ञानाचे विकास, टेक्नॉलॉजी फॉर डेव्हलपमेंट आणि टेक्नॉलॉजी. आम्हाला असं वाटतं की तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समाजाचा आणि जगाचा सुसह्य असा आपल्याला विकास साधता येतो. आणि हा विकास साधत असताना विद्यापीठाने 5 सेक्टर आयडेंटिफाय केले, ज्यामध्ये आमची UG PG आणि रिसर्च प्रोग्राम सुरू होतात. ज्यामध्ये ॲग्रिकल्चर हे सर्वात मोठं सेक्टर आहे, ज्यामध्ये सॉईल, क्रॉप आयडेंटिफिकेशन, डिसायनला संबंधित प्रकारचा आम्ही अभ्यासक्रम निर्मिती केली. दुसरा आणि अतिशय महत्त्वाचा टेक्नॉलॉजी फॉर हेल्थ अँड हेल्थ केअर या संदर्भात सुद्धा आम्ही नवीन अभ्यासक्रमाची आणि आम्हाला करण्याची अनुमती घेतलेली आहे. तिसरा आणि महत्त्वाचा जो ADPच्या मध्ये एक महत्त्वाचा भाग जो आहे, इंडियन लँग्वेजेस रिझोल्युशन. आम्हाला सांगायला अभिमान वाटेल की यासाठी वाटूला महाराष्ट्राचं एक नोडल एजन्सी म्हणून अधिकृत केलं आणि जवळजवळ 100 पुस्तक. त्यानंतर एन्व्हायरमेंटल चेंज डिटेक्शन महत्त्वाचे विषय आहे, डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे आणि मरीन टेक्नॉलॉजी. हे 6 आयामातील विद्यापीठ सातत्याने काम करतं आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी आपला हा उपगत भाग आहे. डिफेन्स अँड डिफेन्स स्ट्रॅटेजी हा सुद्धा आमचा एक महत्त्वाचा भाग असून तंत्रज्ञानाचे विकास साधण्यासाठी आम्ही संपूर्ण कटिबद्ध आहोत. धन्यवाद. Honorable Chancellor Sir and all the dignitaries at Dr. Homi Bhabha State University, which is again a new university founded in 2019. We believe that universities are the engine to the national economy. So with this belief, our programs are based on 4 pillars: creativity, communication, collaboration and critical thinking, because these are the 4 leads of today's employment, employability and entrepreneurship is very important. So from this perspective, all our programs have been designed with collaboration with industries, and there are many leading industries which are running their programs in collaboration with Dr. Homi Bhabha State Universities. Most of them are, I would like to mention a few, like Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, and this will definitely take a leap towards the 5 trillion economy. Another important aspect is internship embedded programs which have been started by our university, and at least a course in each program has been designed with internship embedded degree program. Secondly, we also give a lot of trust on artificial intelligence and so on. And this is all with experiential learning, on-job training, and other aspects which will give the real kind of skills to the young generation. We also have programs based on SDGs, Sustainable Development Goals, and as far as research is concerned, because our affiliated colleges, our constituent institutes, they have a legacy of more than 100 years old, where Dr. Homi Bhabha has taken his education. So we have programs, research programs, which are in collaboration with industries abroad, and we have collaborated with Taiwan-based industries in semiconductor technology. And there is a center which is coming up, which is for below poverty line, so which will ensure the inclusive kind of education for the students. There are other programs. It's been done, and we also are doing a lot of things as far as the quantum mission of Government of India is concerned. There is a MOU with Summit, which is based in IIT Bombay. We also believe in holistic growth of the students, so we have a bachelor's program in yoga, a master's program in yoga, and lot of trust on innovation through patents and startups. So that is a brief about our university. Thank you very much. Thank you very much, all the panelists. I understand we want difficult to write, so we say 150 seconds में wind up करना, but you people are really ready है. Thank you very much everybody. And इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है गुड गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, इस विषय पर बोले के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रमोद इंद्रे जी को, डॉक्टर राजशेखरन पिल्लाई, वाइस चांसलर सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी, Dr. Uddhav Bhosle, Vice Chancellor Sanjay Guravat University Kolhapur, and Professor Pramod Pandey, Vice Chancellor Deccan College of Postgraduate and Research Institute.
delegates, the theme of good governance and security is a foundational to the vision of develop and empower India by 2047. This thematic panel aims to explore strategies, principles and collaborative efforts necessary to ensure effective governance and security. We, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, focus on following important points for the good governance. Good governance practices, enhancing transparency, accountability and citizen engagement, implementing digital governance solutions to efficient service delivery, innovation in governance, leveraging technology for e-governance and citizen-centric services, implementing data-driven decision-making for policy formulation, ensuring accessibility and inclusion in government initiatives. Third one is security challenges and solutions. As the advancement of technology we are using in the governance, addressing cybersecurity threats and safeguarding digital infrastructure is very important. Enhancing border security and promoting international cooperation, ensuring the safety and resilience of critical infrastructure. Community participation in governance, empowering local communities for sustainable development, strengthening decentralized governance structure, promoting civic education and awareness. The role of universities in promoting good governance is very important. As Honorable Prime Minister said, अगले 25 साल अपने देश के होंगे, because India will be the youngest country, and in that case, integrating governance studies in the academic curricula is important. Conducting research on effective governance models, engaging students in community services and governance projects. I am happy to say here that the Constitution, this subject mandatory to all the UG and PG students. Also, sir, we have introduced the subject entrance to politics also. The university's commitment to good governance and security. As a representative of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, I will highlight our commitment to instilling values of good governance and security of our academic programs. Thank you. I'm Rakshakan Pillai, representing Somaya Vidyavihara University, Mumbai. Your Excellency, Honorable Governor of Maharashtra, and other distinguished colleagues. In good governance, what we think necessary is enhancing the diversity, enhancing equity and inclusion at all levels. Definitely technology, models of online and hybrid learning. Student well-being, connecting with community. Honorable Prime Minister mentioned two words, vocal for local. I mean, a voice for the local community. That's very important. Creating a voice in our higher education institutions for the local community. We want to connect with the local community and also at the same time with the industry and the global practice in higher education. So the higher education, out of its 62 in higher education. We believe that knowledge alone liberates. We also know that knowledge is for definitely getting, learning is to get knowledge, learning is for skills, learning is for further to learn, and learning for living in a community with harmonious coexistence. That also we believe. Our uniqueness as a university is we have a faculty of Dharma studies on Bharatiya Sanskriti, Jainism and Buddhism and for example, we just look at, we believe that there is a lot of knowledge and skills associated with the ordinary, rather even literate people in the country. And looking at their skills, how
how technology can empower these people. We launched a program, assessment and certification of prior learning. With the agriculture, with the health treatments, we have a lot of knowledge and skills in all areas, all walks of life. It may not be in the schools or higher education institutions, but we just look at these particular skilled people and how technology, how higher education, how the university can connect with them. This is one of the things. On 19th and 20th, we are hosting the Western Zone Vice Chancellor's Conference in Somaya Vidyabhar University with these things. I am very confident that the Prime Minister's idea of vocal for local, which he mentioned today, is very important in the university system in the country. We also look at possibilities of bringing large number of youngsters at the middle age who are highly educated from India, working abroad all over the world. How to bring those? These are the things which we look at. Thank you very much. Pramod Pandey, Deakin College, the Highness, the Governor Sir, and all the dignitaries present here. I represent an institution which is the third oldest in the country, Deakin College Postgraduate Research Institute, deemed to be university. Our main interest in promoting education is heritage studies. The Deakin College has only 3 subjects, but we are established in the country. Scientific archaeology was established. We have been associated with this. Those साल हमने निकाले हैं और अभी भी चल रहे हैं और मजबूती से चल रहे हैं। यहाँ 2 बातें हैं, एक तो शिक्षा संस्थान और दूसरा गवर्नेंस, दोनों का सम्मेलन जरूरी है। एज ए शिक्षा संस्थान गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं उसे पूरी तरह से प्रैक्टिस करने की कि सबका पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट लेवल पे सबका पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट एक्टिविटीज में, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हर एक एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंटल कमिटी नहीं करते, इसे 3 लोग बैठेंगे, सभी लोग मिलकर के फाइनली डेमोक्रेटिकली डिसीजंस लेते हैं और जो भी इंडिविजुअल व्यूज हैं, डिफरेंसेस हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको सम्मानित करते हैं। लेकिन जो सब लोग मिलकर के जिस लेवल पे पहुँचते हैं उसको हम लेते हैं। एम्प्लॉयज़ के बारे में हम हर एक एम्प्लॉयज़ के पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को से डील करते हैं। एक चीज़ जो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती है वो है एम्पैथी। दैट इज जो ऑफिसर्स हैं, वाइस चांसलर को, चाहे जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको ताकत एक को जन्म देती है, एक को प्लेस करती है, वही शक्ति और ताकत सभी को प्लेस करती है। और इस हिसाब से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब कुछ जरूरी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम सबका विकास। हम डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फेलोशिप भी रखते हैं और बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, उनकी पूरी फेलोशिप है और हम इसमें बहुत कंसर्न है कि जो इक्वालिटी का प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस को कम से कम किया जाए, इसके लिए हमें हमारा विशेष ध्यान रहता है। जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो भी नॉलेज हम देते हैं वो साइंटिफिक नॉलेज हो और जितना भी हमारे हेरिटेज स्टडीज में हेरिटेज के बारे में बोला जाता है वो सिर्फ किंवदंतियों और कहानियों के रूप में न हो, बल्कि वैज्ञानिक धरातल पे हो। और यही हमारा मेन इंटरेस्ट है। हम चाहेंगे कि साइंस हम अच्छी गवर्नेंस के लिए अच्छी संस्थाओं से भी सीखें और उस तरह हम
PhD इस विजन को 2047 को हम साकार करें। थैंक यू। माझे कुलगुरू सहकारी आणि या सभागृहामध्ये उपस्थित सर्व आदरणीय आज परिस्थिती थोडी बदलत आहे आणि बदलत्या परिस्थितीमध्ये विकसित देशाची संकल्पना थोडी बदलत चालली आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. ज्या देशांच्या शैक्षणिक संस्था आणि वित्तीय संस्था ह्या अधिक बळकट आहेत ते देश विकसित आहेत असं किंवा ते देश विकसित होतात असं माझी थोडी त्यामध्ये संकल्पना आहे. इनफॅक्ट दिस इज माय ओन ओपिनियन. आणि अशा ह्या बदलल्या तर भारतामधली जी विद्यापीठ आहेत, भारतामधल्या ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्या विकसित होणं बळकट होणं अधिक महत्वाचं आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं. विद्यापीठ बळकट होण्यासाठी विद्यापीठामध्ये जी काही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आहे, कधी रिसर्च आहे, जे गव्हर्नन्स आहे ते अधिक स्ट्रॉंग किंवा अधिक बळकट होणं, अधिक विकसित होणं आवश्यक आहे. आज एज्युकेशनची टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे. आज टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये टीचिंगमध्ये एज्युकेशन एनी टाइम, एज्युकेशन एनीवेअर, एज्युकेशन ऑन डिमांड ही संकल्पना आज विकसित होत आहे. तर एज्युकेशन एनी टाइम, एज्युकेशन नवीन टीचिंग लर्निंग पद्धती आहेत किंवा नवीन टेक्नॉलॉजीज आहेत त्याचा वापर करणं आवश्यक आहे असं मला आज या ठिकाणी वाटतं. आणि दुसरा कंपोनंट आहे तो रिसर्चचा कंपोनंट आहे. त्या रिसर्चच्या कंपोनंटमध्ये जे रिसर्च देशासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. The university should work on the issues of national importance such as urbanization, population, healthcare, climate change and policy studies. University should teach or educate the student on multidisciplinary education which come through multiple interactions. At this underrepresented group should be brought in by giving some additional facilities for the students. And I personally feel that the governance of any university should be open, transparent and flexible and accountable. Thank you. मनापासून धन्यवाद आपल्या चौघांना. आणि आपण आपला विषय अतिशय सामंजस्याने व्यवस्थितपणे आमच्यापर्यंत पोहोचवला. The next topic is India in the world. And I would like to invite Vice Chancellor of Maharashtra Institute of Health Sciences, Nashik, Lieutenant Dr. Madhuri Kanitker, Dr. Subhash Chaudhary, Vice Chancellor, Rashtrasant Tukaroji Maharaj Nagpur Vidyapith, MGM University Aurangabad, Professor Manoj Kumar Tiwari, TISS, Dr. Siddharth Shahani, Executive President of Classical Technical University. माननीय राज्यपाल महोदय जी, मंच और सभागृह में उपस्थित विकसित भारत के नेतृत्व की सशक्त सेना, आज मैं यही बोलूंगी सब हम अपने आप को, क्योंकि हम सबको आज ऐलान मिला है और जिस तरह कोविड के ऐलान आवाज एक मिनिट थांबा ना, आवाज कमी करून टाकू ना. आवाज इथं इंटरनली कमी करता माननीय प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहेबांचा आता भाषण आहे त्याच्यावरून आम्हाला काही शैक्षणिक बोल काय बोलणार आहे कॉन्फिडन्सली बोलाय. हां नमस्कार, मी डॉक्टर बाबू नाही नाव सांगायचं. नमस्कार, माझं नाव सरला डॉक्टर जाधव आहे. मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीमध्ये MA फर्स्ट इयर सोशिओलॉजी विषय शिकत आहे. मला आपल्या
भारत देशाचे माननीय पंतप्रधान नाही नाही थांबा सर हा लोगो घे पाठीमागचं इथून घेतली समजा अशी तर हे दोन्हीचे इंटरॅक्शन पण होऊन जाईल हे चालू असताना इंटरॅक्शन पण होईल घ्यायचं का तसं हे दोन्ही एकत्र होईल ना हे बोलणं आणि हे सगळं एकत्र होईल ना हां बरोबर नाही आपण कार्यक्रम सोडून दुसरीकडे करत नाही ना असं होणार नाही आपण इथे येतो ना पण हे असं जर राहिलं हां हे फ्रेम आणि इथं विद्यार्थी इंटरॅक्ट बनवाया और आज जो इसी साल दो कपा क्या लेके गए घर पे जिसमें भी हमने कहा और इस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है तो आज क्या करके आए हैं चला लवकर संपून टाका चलिए बरं तू पण एक बाईट देऊन टाक हो गया बोले बंद करो नहीं आपने बोल दिए हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं तो चारों जिलों में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रयास हमने चालू किया है हम कहते हैं कि भारत एक फिफ्थ फास्टेस्ट इकोनॉमी की बात हम बार बार करते हैं लेकिन साथ साथ पर हेड इनकम पर कैपिटा इनकम ये बढ़ने के लिए हमको गांव में या विलेजेस में या रूरल में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है उनका जब तक हम इनकम बढ़ाएंगे नहीं तो हमारा पर कैपिटा का इनकम बढ़ेगा नहीं और शायद पर कैपिटा इनकम सुदृढ़ होंगे। इसको लेते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और बाकी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जो टेक्नोलॉजी अब तक के डेवलप हो गई तो आदरणीय पंतप्रधान जी ने जो कहा है कि लैब टू लैंड ये संकल्प लेते हुए जो भी रिसर्चेस हमारे यूनिवर्सिटी में हुए हैं या रिसर्च सेंटर में होंगे वो गांव तक या खेतों तक फैलाना और हमारा सबसे बड़ा जो जल जमीन और जंगल है ये नेचुरल रिसोर्सेज पे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप हो वहाँ के संसाधनों का उपयोग करके दुनिया तक ये कैसे पहुँचा है ये सब हम कर रहे हैं। विद्यापीठ ने उसके साथ साथ एक चीज़ और की है स्पोर्ट्स में कि यूनिवर्सिटी है जहाँ इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक ट्रैक बन के रेडी है और दूसरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो इंटरनेशनल लेवल का है जिसमें मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने शायद ये अगले हफ्ते उसका भूमि पूजन भी हो जाएगा ताकि हमारी विद्यापीठ के हमारे क्षेत्र के लोग इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे जा सके। धन्यवाद। ये हमारा मिशन चल रहा है। थैंक यू। प्रणाम माननीय राज्यपाल महोदय जी, मैं TISS जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसको भी वहाँ का एक्टिंग वाइस चांसलर हूँ, लेकिन मेरा सर मूल रूप से संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई जो आपके महोदय जो विषय प्रधानमंत्री जी ने आज रखा है
हम लोगों को से बात करने के लिए, जिसके ऊपर अपने विश्वविद्यालय में और वहाँ पे जाकर हम लोग आगे बढ़ाए। महत्वपूर्ण है कि किस तरह से छात्र आगे बढ़े, साथ साथ 2047 का जो लक्ष्य दिया गया है उसके हिसाब से हम हेल्थ केयर अरेंजमेंट्स, अपनी इकोनॉमिक अरेंजमेंट, साथ साथ किस तरह से बाकी चीज़ों में ऐसा विकसित करें जिससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा भार भी नहीं आए और लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा करें। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का बड़ा भारी काम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से चल रहा है सर, है चाहे उड़ान का है जिसमें बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट करीब 70 के आसपास नए बनाए गए, और जिस तरह से फूड पार्क और चारों तरफ मल्टी मोडल पार्क आ रहे हैं, ये सब नए आयाम लेके आएंगे सर, और इसमें नए तरह का स्किल लगेगा जो हमारा डिजिटल इंडिया के स्किल से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह की जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट हैं इनको पूरा करने के लिए जिस तरह का लोन अरेंजमेंट हो, जिस तरह का बैंकिंग सिस्टम हो, उनके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, ये सब भी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं और हम लोग उसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें नए नए सब्जेक्ट डिजाइन करने होंगे, इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस करने होंगे, और साथ साथ हमारे जो अपनी विशेष हमारे यहाँ टिस में मैं देखा सर बहुत अच्छा काम लोग अभी हेल्थ केयर सिस्टम में, साथ साथ बाकी जो विधाएं हैं जैसे इकोनॉमिक अरेंजमेंट कैसे करें, पॉलिटिकल सिस्टम में करें, इलेक्शन रिफॉर्म कैसे करें, इसके यहाँ भी कोर्स चलाते हैं हम लोग जो है। और जहाँ तक IIM मुंबई की बात है तो वहाँ पे हमारा सर सबसे बड़ा फोकस रहता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का, उसके साथ साथ उसमें कैसे हम और चीज़ों को बढ़ाएं। तो सरकार के सहयोग से सर हम लोगों ने एक नया भारत @2047 के ऊपर एक बुक भी लिखा है जिसमें 6 टॉपिक है, और उसमें सब पे विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद महोदय। नमस्कार आदरणीय सर्व आदरणीय व्यक्ती, इंडिया इन द वर्ल्ड या संकल्पनेमध्ये we at Mahatma Gandhi Mission University at Chhatrapati Sambhajinagar working on 3 principles given by Honorable Prime Minister. One is life for environment, where we need to not only protect the environment and reduce the impact of environment and impact on biodiversity, basically enriching the resources. So establishing the students are made aware of utilizing the resources very, very carefully and enrich it. So for that we are insisting paper recycling system, which is a part of educational program. Second important is Gandhian philosophy. As you know that Seva, Shikshan and Sanshodhan, these are the 3 principles which we are executing by way of khadi manufacturing as well as design of khadi, bidri, pottery, and works with hands-on experience. But this is coupled with modern technology, such as innovation and incubation center, where robotics, AI, drone technology, semiconductor, 3D printing, and quantum mechanics. These are the fields where research is going on very focused manner. As you know that which is financial technology aspect, and we have already started financial technology coupled with engineering aspect. Connecting with medical and engineering together. Medical technology was the course which was rigorously developed by taking inputs from both medical educational expert and an engineering expert. And I'm sure that India in the world, it will be the other way in 2047. World will be seen in India. As you know that by 2047, 500,000 international students will be studying in India, and $35 trillion is aimed by Ministry of Commerce. Everywhere India, but global will be seen in our country. Thank you. Honorable Governor, greetings from Atlas Skilltech University, which is Maharashtra's first state private skills university. At our university, we have taken a 3-pronged approach for Viksit Bharat.
Number one is to use design, entrepreneurship, and technology to impart new age education and skills. Number two is to listen to our students, stakeholders, learn from their aspirations. And really, I think we are in a century where if we learn from our students, we are really people who can give their dreams and ambition wings. And number three is ethics, wellness, and mindfulness. Era to give them a very balanced and sustainable future. So that is how we are looking forward to more than India in the world, India for the world, and to a Viksit Bharat. Thank you very much. Thank you all the panelists. It was great to listen from all of you. आणि यानंतर आपण ज्या सब्जेक्टवरती सर्वांना निमंत्रण देणार आहोत ते आहेत तो सब्जेक्ट आहे पॅरामाउंट रोल ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड ॲनिमल हजबंडरी ऑन विकसित भारत. I'd like to invite the Vice Chancellor of Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapith, Dapoli, Dr. Sanjay Bhave, Dr. Sharad Gadak, Vice Chancellor, Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapith, Akola, Dr. Prashant Kumar Patil, Vice Chancellor, Mahatma Phule Maharashtra Animal and Fishery Sciences University, Nagpur, Dr. K. Prathapan, Vice Chancellor, Dr. D.Y. Patil Agriculture and Technical University, Kolhapur, Professor K.S. Hari, Dean Gokhale Institute of Politics, Pune. परम आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, अभी इस सभागृह में उपस्थित सर्व महानुभाव, मेरा नाम है डॉक्टर P.G. पाटिल, वाइस चांसलर महात्मा फुले एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राहोरी. आज कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन विकसित भारत के इस पैनल डिस्कशन में मैं बोल रहा हूँ. सर, आप सभी को पता है बाकी सब इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं. और इस हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें विकसित भारत के लिए जो करना चाहिए वो हम उसके लिए तैयार हैं. जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में 14 कोटि परिवार खेती पर निर्भर है और हमारी जो जमीन है वो 16 कोटि है. अगर 2047 की होगी 166 करोड़ होगी और विश्व की 980 करोड़ होगी और विश्व का ऑलमोस्ट 17% जो पॉपुलेशन है अपने भारत में होगा और सिर्फ विश्व के तुलना में सिर्फ 2.4% लैंड अवेलेबल इंडिया में है. तो बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं. उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि नैसर्गिक संसाधनों की कम होने वाली है, जिसमें लैंड है, वाटर है, एयर है. उसमें कृषि में जो काम करने वाले लोग रहेंगे वो कम होने वाले हैं और हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना और वातावरण बदल बहुत आ रहा है. अनसीजनल रेन से, अनसीजनल हेल स्टॉर्म से ये आगे जाके एक समस्या हमको देखने को मिलेगी. और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो उसमें जो हम बच्चों को विकसित भारत के लिए जो कृषि शिक्षा है, कृषि अनुसंधान है और उसका प्रचार प्रसार किसानों तक लेने के जाने के लिए हम स्टूडेंट के माध्यम से हम तैयार रहने के लिए आपको वचन देते हैं. इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी ने पहल भी चालू की है. विश्व में जो विकसित देश है, विकसित जो देश है उसमें हम बच्चों को भेज रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या है जो विकसित भारत के लिए काम आएगी. हमने लास्ट 4 हम अमेरिका, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया इस देशों में भेजा है. उनके साथ साथ फैकल्टी भी तैयार रहे, इसके लिए ऑलमोस्ट 36 फैकल्टीज को भी हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा था. सर, आप सभी जानते हैं कि आगे की खेती है, शाश्वत खेती होनी जरूरी है. उसके साथ साथ हम अभी देखते हैं कि जो इसके लिए विकसित भारत के लिए जो मैंने बताया
उसके बारे में हमने 4-5 प्रकार की खेती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोलेंगे, संरक्षित खेती, जलवायु लचीलेपन की खेती, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, जलवायु कुशल खेती और सबसे हमारा एक मकसद रहेगा कि किसानों का इनकम और प्रोडक्टिविटी ज़मीन की है वो बरकरार रखें। उसके लिए हम बायोपेस्टिसाइड का यूज़ हो, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो, इसके बारे में भी हमको तैयार रहना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर के ओर हमको जाना पड़ेगा। जैसे यूज़ ऑफ IoT एग्रीकल्चर में ज़रूरी आना है। जैसे ड्रोन का हम देखे हैं कि ड्रोन का भी जो कीटकनाशक, फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फवारनी में छिड़काव के लिए आगे बहुत जोर से आने वाला है। और हमारा विद्यापीठ एक भारत का DGCA अप्रूव्ड एक ड्रोन पायलट तैयार किया है और महाराष्ट्र शासन ने हमको 14 महीने में 10,000 ड्रोन पायलट तैयार करने के लिए हमको दिया है। उसमें रोबोटिक्स है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, सेंसर्स है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, ये सब खेती में आने जरूरी है। उसके साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन एडिटिंग का भी यूज़ जो बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस को कम करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा रहेगी और हम विद्यापीठ उसके काम करेंगे। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारे विद्यापीठ का बृहदवाक्य है अन्नम बहु कुर्वित तदव्रतम, और उस व्रत पे हमारा विद्यापीठ बिल्कुल काम करेगा। और मैं चाहता हूँ को एक सेमिनार रखा है, फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर, फ्यूचर फार्मिंग कैसे होगा, उसमें हम पूना में आयोजित किया है। उसमें ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ के तज्ञ आने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट के तज्ञ आने वाले हैं, बाकी विविध देशों से तज्ञ आने वाले हैं। और फ्यूचर एग्रीकल्चर कैसी रहेगी उसके बारे में हमारा विद्यापीठ कटिबद्ध है। धन्यवाद सर। Honorable Chancellor Sir, dignitaries of the dais as well as on the dais, greetings from D.Y. Patil Agriculture and Technical University, Kolhapur. Here I would like to speak only a few points on Viksit Bharat. I am making my students in my university to learn on interdisciplinary, inter-institutional or industry link. What the industry needs, that much only we are revising our curriculum, and already I have started implementing NEP 2020. Number two, our pedagogy is experiential learning, that is mostly on skill-based, practical-oriented rather than theory. Seeing is believing and doing is experiencing. Some rule I am following. I would like to make my graduates by 2047 as the CEOs and great agripreneurs of Bharat. For that, I have a niche course called Agribusiness Management, so 100% placement I am giving, and our youth. Honorable Modi ji mentioned we were with the begging bowl in 1960, expecting ship to come to our ports for supplying PL 480 wheat grains. Now we are sufficient in food grain, we are exporting. Now we have to think about the quality. That is what Modi ji told. Quality is very important. We have to be parallel to any of the developed nations. For that, value addition is very important. For our fruits and vegetables, though we are second in the world in production, 13 to 15% of our fruits and vegetables are perished. That should be value added, parallel to any of the international product. Hybridizing the traditional knowledge of our own Bharat, as well as the most advanced developments like introduction of artificial intelligence, machine learning, data science, drones, sensors, and all in agriculture. We have to implement, we have to teach our youth that we are doing it in our university. Thank you very much for the patient listening. Honorable Governor Sir and other dignitaries on and off the floor, I am representing only non-agricultural university in the panel, Gokhale Institute of Politics and Economics. We are one of the oldest research and teaching institution in the country.
So one danger which we have experienced in other countries' development is the higher inequality that is going to be imminent unless we are going to include this sector of the economy, mainly the agricultural sector. If we don't give enough emphasis on agriculture in inclusive manner, there is an imminent danger that there is going to be an increasing inequality. So from that perspective, though agriculture contributes only towards 10% of the GDP, we all know that it contributes to almost, say, 40% of the employment of the economy. And over a period of time, there is going to be an intergenerational but still agriculture needs to be given its emphasis because rural population is going to be an increasing force for the aggregate demand, which we economists always believe in the motivator for higher economic growth. So when we need to have a higher demand in the economy, so this agriculture sector, whenever it performed, if you look at India's history, whenever agriculture has performed reasonably well, India used to perform well. So from that perspective, agriculture is always an important domain which we need to focus. And of course, allied activities when we talk about animal husbandries or other fisheries, poultry, and other. In that perspective, Gokhale Institute has always been, in terms of policy making, has been involved into various research activities for the government of India as well as for the government of Maharashtra. And the latest one which we have been part of this initiative of the developed economy in 2047 is the immediate district strategic plan initiative which the government of Maharashtra has initiated recently. And we are in the process of finalizing the district development plan for various backward districts of Maharashtra. And in that process, we have found out that this agriculture and allied activities are going to be a major in terms of doing studies in the domain of agriculture. And another recently established Center for Sustainable Development would always be interested in contributing towards this type of initiative. So this is all Gokhale Institute has to contribute in terms of research. And we do have a teaching program which extends from undergraduate to that of the PhD level also. So in this way, we are contributing or trying to contribute to whatever little towards the development of this country. Thank you. Honorable Governor, sir, myself, Dr. Sharad Gadak, Vice Chancellor of the Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidyapit, Akola. Sir, in Agriculture University, main object of Agriculture University to do the research, education, extension in agriculture. And in case of education, every year from Agriculture University, more than 15,000 students are passing now. And this is the strength of our country. And now we want to give the direction to the student, and that's why these students should be retained in agriculture is very important. Otherwise, giving the education through the agriculture. And that's why this entrepreneurship development in agriculture is important. Then high-tech agriculture is important for development of our country. Then second thing is the research. Research should be taken in consideration. It should be need-based for stakeholder and as well as farmers need. And we are doing this research now. And we have did the very good research. All university did the research. Now we achieved now 324 million tons of food grain productions, and we are self-sufficient in food grain production. And future demand will be the about 400 million tons.
and we will achieve this. But farmers not getting price, this is very important, and that's why our universities should think on that, so how to increase the income of farmers. And that's why doubling farmer income, our government has declared the doubling farmer income, and that's why it plays the very important roles. So what doubling farmer income to increase the, first is increase the productivity. By doubling the productivity, it increase the income of 33%, reduce the cost of production, it reduces the cost of production through the mechanization, micro irrigation, it increase the income of the 33%. This will be increase the income of the rural income of 33%. And that's why the increase the income of the farmers, these are the three principles we should take in consideration in future. And integrated for sustainable agriculture, integrated farming system model should be implemented in our country for the Viksit Bharat to 2047. Thank you very much. नमस्कार, महामहिम राज्यपाल महोदय, मेरे सभी वाइस चांसलर कलीग्स और अतिथि, मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की एक ही जो यूनिवर्सिटी है जो कि उससे आया हूँ, और आपको बताते हुए हर्ष ये होता है कि पूरे भारत में जिस प्रकार का व्याप इस यूनिवर्सिटी का है और जिस प्रकार की एक्टिविटी है, जितनी बड़ी एक्टिविटी है और कोई भी स्टेट में नहीं है। कारण है कि बहुत विविधता यहाँ पर है। और जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम अलाइड साइंसेस में एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और जिसमें जब अकाल की बात आती हो या एग्रीकल्चर फेल हो जाता हो, बहुत सारे पाटिल साहब ने बताया कि ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ क्रॉप फेल हो जाता है, तब एनिमल हस्बेंड्री ही उसके साथ रहती है और वो उसको इनकम देती है। इसीलिए बड़ा, इसी के साथ साथ हम डेयरी, जो कि एक इंडस्ट्री की तरफ हम जब दौड़ लगा रहे हैं, तो इंडस्ट्री के लिए डेयरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, और साथ ही साथ फिशरीज। आप सब लोग जानते हैं कि जब 1947 में हम जब स्वतंत्र हुए थे, तब हमारे पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था, लेकिन हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये बता दिया। टेक्नोलॉजी लेड रिवॉल्यूशन या मिशन बेस्ड एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री कैसे करना है, मुझे लगता है ये अपने भारत देश ने बता दिया है। और इसी का कारण ये है कि आप डेयरी की बात करो, मिल्क प्रोडक्शन की बात करो, सो वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड। दूसरी बात है कि पोल्ट्री में हमने बहुत अच्छी प्रगति कर ली है, चाहे वो पोल्ट्री के एग्स की बात हो, मीट की बात हो। तो जो फूड सिक्योरिटी की जो बात बार बार कही जाती थी कि हम फूड सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी तो हमने कर दी, लेकिन एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी अच्छी क्वालिटी का फूड कैसे हम तैयार करें, ये आज का प्रश्न आ रहा है। इसके लिए हमारे पास जो मनुष्य बल है, तो वो स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग इस तरह से दे रहे हैं कि 5 साल का कोर्स, उसके साथ साथ उसको इंटर्नशिप 1 साल की, और उसका जो विषय उसको अच्छा लगता है, चाहे डेयरी हो, फिशरीज हो, उसमें हम इंटर्नशिप या इंडस्ट्री के साथ अटैच करते हैं। पास विषय आ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमने बहुत अच्छी तरह से यूज की है। जैसे हमारे यहाँ से गिर गाय जाके ब्राजील में उन्होंने उसका ही प्रोडक्शन 3 गुना या 4 गुना कर दिया था। वही टेक्नोलॉजी हम अपने यहाँ पे विकसित कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। लोग आगे आ भी रहे हैं। डेयरी एक बहुत बड़ा विषय है कि जहाँ पे हम इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पोल्ट्री का भी यही बात है, और फिशरीज में जो ब्लू रिवॉल्यूशन आया है, बहुत पोटेंशियल है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी तकनीकी हमने तैयार की है कि जो अब प्रचार प्रसार की बात और रिसर्च की बात है, वो हम हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहे हैं। Thank you, sir. And all the distinguished faculties on the dais and up in front of the dais. I am representing one of the university which is in the coastal part of our Maharashtra, and we are having a niche excellence crops like mango and cashew and spices and whole coastal sea line where we have the fisheries in our education.
As we know that in an Indian economy is dependent on the agrarian economy, and where largely the 60% of the population is depending on the, you can say, the agriculture and agricultural subjects also, agriculture fields. However, the Invest India group has suggested that if the FTIs are coming into the country and they are largely depending that, it says that it is coming from the 61 countries and going into the 16 sectors and reaching to 35 states of the Maharashtra. Now the development has gone to the end of the, you can say, the Maharashtra sector, that is in the rural sectors. And so the agriculture is been the paramount important role over there. I know that we are dealing with the very climate risk, you can say the sector over there, which is largely depending on the climate change and the natural resource degradation also. But we are reaching out various good conclusions, and we are finding out so much solutions over there. I quote one example from our university, that is the one variety that is in the cashew, we can say that one variety, Vengurla 7, has contributed to the Maharashtra and saving the foreign export of more than 4,000 crore rupees. So I'm saying that not only the one commodity or one variety or not one technology, almost we are contributing to the Maharashtra economy more than 30,000 crores of the turnover every year. Most important part into the national economy also, to making our country from the fifth largest economy to third largest economy very soon, very easily. And our university has developed with the help of this honorable, you can say, the central government facilities, that National Agriculture Higher Education Project. We have developed the virtual reality lab with us, virtual reality modules. We have the simulation modules with us. We have the, you can say, the language lab and the virtual classrooms for the teaching to the facility to the students. So we say that our university is developing large ahead, and we thought that in the 2047, as per the Honorable Prime Minister says, that we will be reaching to the most advanced technological farmers with us, and so that we will hope that our country will be getting a more, the good quality and no hunger will be there. And we'll be the most largest exporter maybe in the future, and in almost all sectors, in food and fruits and everywhere. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच. आणि इथे हे पॅनल डिस्कशन 6वं इथेच संपतंय. बेल वाजवावी लागते कारण आपल्याला पुढे जायचंय, म्हणून आपल्याला कोणाचा अधिक्षेप आम्हाला करायचा नाहीये. आणि यानंतर आपण 7व्या विषयाच्या तज्ञांना बोलवूया इथे आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी. हाऊ टू एंगेज यूथ फॉर कॉन्ट्रीब्युटिंग आयडिया ऑन विकसित भारत. I'd like to invite the Vice Chancellor of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Dr. Sanjeev Sonawne. Dr. Apurva Palkar, Vice Chancellor, Maharashtra State Skill University, Mumbai. Dr. Mohit Dubey, Design and Technology University, Pune. Dr. Sanjeevan Arsud, Vice Chancellor, Spicer Adventure University, Nashik. Professor Anurag Asawa, Dean, Google Institute of Politics, Pune. या पॅनल डिस्कशनच्या नंतर आपण 10 मिनिटं इथे या सभागृहामध्ये असलेल्या लोकांना जर आपले विचार व्यक्त करायचे असेल तर ओपन डिस्कशनसाठी तो वेळ ठेवणार आहोत, आणि त्यानंतर मग आदरणीय राज्यपाल महोदय आपल्याशी संवाद साधतील. बट प्रायर टू दैट लेट अस बिगिन द लास्ट सेशन. नमस्कार आदरणीय सर जी और यहाँ उपस्थित महानुभाव. अब तक जो 6 पैनल हुए हैं उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में और वाइस चांसलर का जो विजन है वो अपना अपना बताया. प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है हमारे युवा छात्रों के दिमाग में, हमारा भारत, विकसित भारत के बारे में जो उनका सपना है, उनका विजन है, और ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो इसलिए अपने यूनिवर्सिटी में हम क्या कर सकते हैं, कौन से एक्टिविटी या कृति कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं कि उससे हमें ये पता चले कि हमारे युवा छात्रों के बारे में विकसित भारत 47 के सपने क्या है, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज उनके दिमाग में है, क्या क्या प्रोग्राम वो चाहते हैं. इसलिए मैं संजीव सोनावने, वाइस चांसलर YCUMU, इस तरह से हम अपना एक रिपोर्ट बना के फिर नीति आयोग को हर एक यूनिवर्सिटी का इकट्ठा करके दे सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के जो युवा छात्र हैं उनके दिमाग में विकसित भारत के बारे में क्या क्या कल्पनाएं हैं. तो हम एक ये YCUMU डेडिकेटेड पोर्टल यहाँ विकसित भारत के बारे में बनाएंगे कि जहाँ अपना पूरा जो स्टूडेंट है वो अपने अपने हिसाब से अपनी जो एक्टिविटी है उसमें रिकॉर्ड कर सके. दूसरी बात ये है कि
जो सोशल मीडिया कैंपेन होगा कि वहां से हम उनके आइडिया इकट्ठा कर सकेंगे। उसके बाद जो भी आइडिया उनके आ जाएंगे वो सबका फीडबैक लेके आएंगे। फिर ये जो विकसित भारत के बारे में अभी जो चर्चाएं हुई है, ऐसी कुछ सम्मेलन में या कॉन्फ्रेंस बना के विकसित भारत उत्सव कुछ क्षेत्र में, क्योंकि वाईसीओमी का क्षेत्र जो है पूरा महाराष्ट्र है, तो हमारे जो रीजनल सेंटर है वहाँ रीजनल सेंटर में विकसित भारत उत्सव, वहाँ छात्रों को भी सम्मिलित करके शामिल करके उनकी जो आइडिया है वो हम इकट्ठा कर सकेंगे। और ये जो है विकसित भारत के बारे में छोटे छोटे माइक्रो वीडियो, आधा मिनट के 1 मिनट के है वो इकट्ठा करेंगे। और लास्ट में जो है कम्युनिटी रेडियो से भी हम ये छात्रों के पास जा सकेंगे। और ये बात सही है कि आज के जो छात्र हैं कल के विकसित भारत के नेतृत्व वो करेंगे। लेकिन बात ये है कि 9वीं से 12वीं तक जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके भी बारे में, विकसित भारत के बारे में जो सपना है वो भी हमें जानना है। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी के विसिनिटी में जो भी स्कूल है उनके पास जाके बच्चों को अपने अपने विजन जो है वो रिकॉर्ड करके इकट्ठा करके। श्वेता मैडम, हम ये चाहते हैं कि ये इस पैनल में हमने जो अभी बताया है कि हर एक यूनिवर्सिटी में अपने अपने है अपना यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट करके हम सभी महाराष्ट्र के छात्रों का जो आवाज है विकसित भारत 47 के बारे में वो हम नीति आयोग को दे देंगे। इसलिए सभी कुछ टाइम लिमिट करके बाद में हम एक छोटा सा टास्क फोर्स करके भी कर सकते हैं। बाकी मेरे पैनलिस्ट को मेरी विनंती है कि अपने ही विचार रखें। थैंक यू सर। नमस्कार माननीय राज्यपाल महोदय, उपस्थित सभी अतिथिगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ का प्रतिनिधित्व मैं आज यहाँ पे कर रही हूँ। स्किल पे बहुत ही जोर दिया है और मुझे लगता है कि युवक युवतियों के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान है वो स्किल्स का ही होने वाला है। एक जो धोरण हमने लिया है, ध्येय जो इस विश्वविद्यालय ने लिया है, विद्यापीठ ने लिया है, वो है डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स, सोचने की क्षमता बढ़ाना। ये सबसे बड़ा एरिया है जिस पे आई थिंक पूरे राज्य में सभी युवक युवतियों को इसकी जरूरत है। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, फैकल्टीज को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि मैंने सामने रखकर मुंबई में छोटे सा एक पायलट में अभी कर रही हूँ। 20 कॉलेजेस हैं जिनमें मैंने प्री इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है। प्रो बोनो बेसिस पे हमारा विद्यापीठ जो है इनके लिए काम करने वाला है। ये एक जो प्रयोग है मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में भी किया था और मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमें बहुत ही प्रेरणादायक युवक युवती और जिनका आइडिएशन है उसको प्लेटफॉर्म पे देने की एक बहुत बड़ी ये मिलेगा। मतलब they will get a space where they will be able to express themselves and this is very important. फैकल्टीज को अंडरस्टैंड करना कि हाउ डू यू एम्पावर द यूथ। यूथ का एम्पावरमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। आज यूथ सोच सकता है, आज यूथ की कैपेबिलिटी है रिस्क टेकिंग की, क्योंकि इसके पास कोई प्रेजुडाइज नहीं है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जब तक यूथ की आइडियाज कमर्शलाइजेशन तक नहीं लेकर जाएंगे तब तक आई डोंट थिंक विकसित भारत हो सकेगा। आज हम कह रहे हैं कि भारत आज इन द जीडीपी स्पेस पे हम 5वें स्थान पे हैं और
विकसित देश यदि हमें बनाना है, जर्मनी की तरह हमें यदि देखना है, यदि हमें साउथ कोरिया को यदि सामने रखना है, जहाँ पे आई थिंक जर्मनी में 50% ऑफ द यूथ गेट स्किल्ड ट्रेन्ड फॉर वन रीजन, दैट स्किल ट्रेनिंग हेल्प्स देम, सपोर्ट देम टू बिकम कॉन्फिडेंट। जहाँ उसे एक स्किल आ जाता है, उसके पास कॉन्फिडेंस की निर्मिति हो जाती है। और दो चीजें हैं, एक तो एम्प्लॉयबिलिटी और दूसरा उद्योजकता। ये दो चीजें यदि हम समाज में ला सके तो आई थिंक यूथ अपना जो है एक्सप्रेशन कर सकेगा और यूथ पार्टिसिपेट यूथ को गुड जॉब्स, कॉम्पिटिटिव जॉब्स दे सके, तो आई थिंक एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा ये पॉलिसी इंटरवेंशन। यदि हम कर सके तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और एक कंज्यूमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हाउ डू यू एक्साइट यूथ टू बाय प्रोडक्ट्स विच आर इंडियन प्रोडक्ट्स, जिसमें इंडियन प्रोडक्ट्स की निर्मित होनी जरूरी है, उसके बारे में बोलना जरूरी है, जो शैक्षणिक संस्थाओं से हो सकता है, हमारे विश्वविद्यालय से हो सकता है, हमारे विद्यापीठ से हो सकता है। सो ये 2-3 सूचना मुझे लग रहा था एज ए यूनिवर्सिटी हम इसे जरूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, बनाने में योगदान देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Respected Governor Sir and the respected TIAs, whatever the discussion we are happening about the how youth can be participating in the Viksit Bharat, so whatever we have been doing as a Dean Academics, I would like to share with you what the concept Panchatantra we have taken when we talk about the youth. The creative, accessible platforms where we have created the online platform where they can develop their own dedicated online platform, youth to submit their ideas. Online forum we have provided them to organize the workshop, hackathons and the idea generation sessions across various locations. At the same time, we try to find out to allow students to create their own website so that whatever the information they want to share, their own website on that. The second aspect which we talk about is focus on a specific area. So unless we talk about a specialization, the things are not going very well. So we have identified the area where the youth can contribute meaningfully, such as education, healthcare, technology, sustainability, entrepreneurship. And these all areas we have found out with the research institutions and research centers available in the Google Institute itself. So we have a Center for Sustainable Development, we have a Center for Excellence in Entrepreneurship, we have a Center for Entrepreneurship, etc. At the same time, we have tried to find out to organize a thematic workshop and context focus on these areas to generate specific solution and answer. So we try to find out, give the Indian data to them so that they can understand what US-based book, but what answer they can provide with the help of Indian data. At the same time, we try to find out, make it engaging and fun. So in that case, what we generally do, so we try to find out the gamify the process and use the game mechanics like points, badges, leaderboards. This case, we try to find out a platform, we provided them the Coursera, and we try to understand how many students are, apart from economics, what other courses they are taking. The more the time they are spending there, more the courses they are giving. We are felicitating them in the different cases. At the same time, we allow them to utilize the social media like LinkedIn, etc. So whatever the outcome they are doing, whatever the project they are completing, they can put on the LinkedIn so that people should understand what the students are doing, and based on focusing on the foster and recognition and ownership. Unless we recognize their efforts, unless we give them ownership, they are not going to get the benefit. So this fourth point, we go for that, and we publicly acknowledge and reward outstanding ideas and contribution based on the paper publication on our research journal. At the same time, we have our own students generated newspaper 810. They can publish the paper over there. And last point, which talk about how we can empower the trust and youth, and based on that we make the thing. And the last, I will just conclude with the Mir Taki Mir Shairi. Thank you. आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की ओर से मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें।
2047 के भारत की जब हम परिकल्पना करते हैं तो हम उस समय करीब करीब $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होंगे, क्योंकि भारत उससे बहुत पहले विकसित हो चुका होगा। उसको ध्यान में रखते हुए यह विश्वविद्यालय जो है एथिकल वेल्थ क्रिएटर्स और ग्लोबल जॉब क्रिएटर्स को क्रिएट करने में लगा हुआ है। इसलिए इस विश्वविद्यालय का जो नया विजन है वह है अ न्यू एज यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, उसमें 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है जिसपे यह विश्वविद्यालय काम कर रहा है, में जितने भी हम लोग के इंटरवेंशन होंगे वह भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार होने चाहिए। दूसरा स्तंभ जो है वह इन सभी युवा शक्ति को हम किस तरीके से अपने आइडिया जनरेशन कॉन्टेस्ट में, ग्रैंड चैलेंजेस में जो कि केंद्र व राज्य सरकार के अनुकूल बनाए जाते हैं, उनमें कैसे इनके आइडियाज को हम लोग जनरेट कर सके, वह हमारा दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ जो है हमारा वह है हैकेथॉन्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी कैसे तैयार किया जाए। मुझे बड़ा गर्व है ये बताते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हार्डवेयर एडिशन जो 19 से 23 दिसंबर में हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है, और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया रहेगी ताकि हम समाधान जो दे सके वह हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में दे सके। बड़ा ड्रीम है रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क, जो कि एक प्राइवेट विश्वविद्यालय में बनाने का विजन है, जो कि रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप तीनों आयामों में बहुत बड़ा योगदान देना चाहता है। और एनईपी में जैसा एक परिकल्पना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में इस विश्वविद्यालय का बहुत से ज्यादा योगदान रह सके। पांचवा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये जो हमारे युवा हैं वह इंडियन सॉल्यूशंस फॉर नॉट जस्ट द स्टेट, नॉट जस्ट द नेशन, बट फॉर द ग्लोबल नीड्स, कैसे ये इन सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सके। और ये सभी कार्य वे जो हैं जीरो डिफेक्ट विद जीरो इफेक्ट की Honorable Chancellor, members of this distinguished August gathering, we at Spicer Adventist University, Pune, are inspired by the words of our beloved Prime Minister. Mind is never a problem, mindset is. We realize that we have young minds to train for Viksit Bharat at 47, and therefore we have changed our mindset in the following ways. Firstly, we are implementing the National Education Policy 2020 with dedication. We at the university are taking Viksit Bharat through change in the curriculum and in the faculty development program. We are also insisting on reconnecting our students with the alumni residing in developed countries so that they can get first-hand information on the best practices through a dedicated portal. We are organizing seminars, interdepartment, inter-university conferences, and finally, we with dedication follow the SOPs given by the government and the directive it gives us on Viksit Bharat at 47. Thank you. सर्वांना सांगू इच्छितो की आपण सगळेजण ज्या वेळेला बोलत होता त्यावेळेला 2 मिनिटाचा अवधी होता, बेल दाबली जात होती, तिथे कोणाचाही अधिक्षेप करण्याचा आमचा मनापासून हेतू नव्हता. सो मी एक दिलगिरी व्यक्त करतो आणि द हाऊस इज ओपन फॉर द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑन विच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर स्पोक विथ अस, वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज. इट इज ओपन फॉर यू ऑल. फक्त माझी एक छोटीशी विनंती आहे की प्लीज रेज युअर हँड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग. इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ, युअर युनिव्हर्सिटी, अँड यू आर गिवन अबाउट 60 seconds. So 1 minute is enough. Hello. राज्यपाल जी, हर्षवर्धन जी, मंगेश जी, आदरणीय महामहिम, उपस्थित सर्व ज्ञानीजन,
मैं श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे से बात कर रहा हूं। आज हमने जो सुना है और पंतप्रधान जी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए केवल एक साथ काम करने से काम नहीं होगा। हर एक विश्वविद्यालय में अपना एक खास योगदान होना जरूरी है। के साथ विकसित भारत 2047 के लिए पिछले साल से ही काम शुरू करना किया है। उसमें से एक है ज्ञान के साथ कुशलता और ज्ञान और कुशलता के साथ नैतिक मूल्य के संस्कार। ये हमारे जो कोई सिलेबस है उसमें हमने ऐड किया है। दूसरा जो प्रिंसिपल है स्वयं रोजगार, स्वयं अध्ययन और संसाधनों पर संशोधन। इसके लिए एक खास विशेष सहभाग हमने हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में किया है। कर्नल बाल सुब्रमण्यम, the founder chancellor, principal of 3D, that is important. And the last one, sir, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाना। इसीलिए इंडस्ट्री टाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने बहुत सालों से शुरू किया है। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यानंतर आदरणीय हर्षवर्धन पाटील साहेब आपल्याशी संवाद साधतील। Respected Honorable Governor of Maharashtra and all my friends, मला असं वाटतं आपण सर्वप्रथमतः पहिल्यांदा माननीय राज्यपालांचा आपण सर्वांनी टाळ्या वाजून की त्यांनी ही संधी आपणा सर्वांना दरबार हॉलमध्ये येण्याची दिली आणि आज माननीय पंतप्रधान महोदयांनी विकसित भारत, the concept about Viksit Bharat is very important, and my request to all of you is that I am listening to all the panelists on the dais. You have done a great job in your sector. We appreciate your job also. What has been done before, what we are doing at the present, it's all fine. But the seminar is on what you want, what is our vision. So please focus on the vision. Sir, my humble so if we can appoint a small task force and within a period of 7 days we can collect the good suggestions. The Honorable Prime Minister mentioned that if you give top 10 good suggestions, the suggestions will be accepted and they will be also rewarded also. तर माझी विनंती अशी आहे की तो मान 10 सजेशनचा हा महाराष्ट्राला मिळावा अशी माझी विनंती आहे. So in that sector if you can work, that will be really a great achievement for this. You know, our country in 2047 is going to become the youngest country in the world. So think of the young power that we say that हमारा Mr. also mentioned 2047 is focused on education, and we are here, who are here for this education systems in Maharashtra. तर माझी एवढीच विनंती आपल्याला आहे. Once again, I thank the Honorable Governor, I thank the Honorable Prime Minister to invite us. Jai Hind, Jai Maharashtra. सर धन्यवाद मनापासून. मैं डॉक्टर उदय खोड़के, संचालक शिक्षण। मैं वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी से हूँ। कृषि के क्षेत्र में अभी जो प्रकट किए, मैं उसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ। हमें मालूम है कि कृषि एनीथिंग कैन स्टॉप नॉट एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी कहा गया है। और हमने जो स्वतंत्रता के बाद जो उपलब्धियां हमने पाई है एग्रीकल्चर में, उसमें लाइक फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द मार्केट रिफॉर्म्स, फिर भी हमें लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स है इसमें, फार्मर्स, उनके बारे में कम कहा गया है। और जब कृषि के क्षेत्र में हमको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है,
तो उसमें मुझे लगता है कृषि पदवी लेने वाले या कृषि या अलाइड साइंसेस में जो पदवीधर लेते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट उपलक्ष्य में हमारे यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है। अंडर CSR इनिशिएटिव्स प्राइवेट कंपनी के साथ हमने फार्मर्स के लिए और रूरल यूथ्स के लिए मैकेनाइजेशन और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है इसमें स्किल डेवलपमेंट थ्रू KVK शुरू किया है और यही उपलब्धि मुझे लगता है बहुत बड़ी होगी क्योंकि कृषि क्षेत्र में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। Thank you, धन्यवाद। sir. Thank you very much. Respected Governor Sir and all other dignitaries of the Maharashtra education sector, I'm really happy to be here because the government is Viksit Bharat. I think after so many years, the people who are gathered here, they are very well matured, and now our aim should be to make the great social impact. Rather than having how many students we are graduating every year, if we make the dream and vision of making this nation as a Viksit nation with a $40 trillion economy, we have to live with that passion of making impact on each and every person of the country. For example, MIT Group is now in existence for 40 years. We have graduated so many graduates, so many colleges. That new age university, which will really make the social impact for the innovation, research, and economy. And for that purpose, if the government is not giving the grants because of some reason, we have decided to give the grants to the tune of 10 crore rupees per year, 5 crore for research, 5 crore for innovation, so that the ideas of the young people, young graduates will get converted to the prototypes, to the commercial level, and the entrepreneurs will be out of our universities. With that passion, we feel that we are living with that passion. So I think every institution, every university has some vision. If we really make that vision as a character, and if we really work on that with the sleepless nights, then that vision can make the social impact. So that's what I want to say. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रशांत पवार. IIT गुवाहाटीतून शिक्षण घेऊन आणि IICतून शिक्षण घेऊन मी पंढरपूरला गेलो आणि मला वाटतं माझा हे उदाहरण देण्याचं कारण आहे की आपण सर्वांनी रिजनल रिलेव्हंट रिसर्चवरती जर काम केलं तर मला वाटतं बरेच प्रश्न सुटतील. यासाठी आम्ही BRC मुंबई बरोबर कोलॅबरेशन करून तिथल्या टेक्नॉलॉजी गावाकडे नेल्या आणि जवळजवळ 20 गावाबरोबर काम केलं. आता IIT बॉम्बे आणि VGTI मुंबई बरोबर महाराष्ट्र शासनाचा मोठा या विकसित भारतला आपल्याला अस्तित्वात आणायचं असेल तर प्रत्येकाने आपल्या जवळचे काय प्रॉब्लेम आहेत, लोकल प्रॉब्लेम आणि ग्लोबल टेक्नॉलॉजी वापरून जर काम केलं तर मला वाटतं भारत विकसित झाल्याशिवाय राहणार नाही. थँक्यू. थँक्यू सर. प्रणाम महामहिम राज्यपाल महोदय. सभी विश्वविद्यालयों को हमने सुना. मैं एकमात्र कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, मैं उससे प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे आप सभी आचार्य गणों को प्रणाम करता हूं. 2-3 विषय हमारे आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं. प्रथम, हम जो कुछ करते हैं वो सब इदम नमः करके करते हैं और राष्ट्र के हित के लिए करते हैं. परंतु सारे पैनलिस्ट को सुनने के बाद मुझे लगा जब तक हमें अपने परंपरा और अपने देश के गौरव पर अभिमान नहीं होगा तब तक जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इस भावना से हमारे नागरिक प्रेरित नहीं होंगे. तो हमारी शिक्षण व्यवस्थाओं में हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है उस परंपरा के अभी समाज में ऐसी बहुत सी शिक्षण परंपराएं हैं जो किसी विश्वविद्यालय में कहीं भी पाठ्यक्रमों में नहीं है. हमारा विश्वविद्यालय विस्तार सेवा मंडल के माध्यम से इस ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा में होने वाले विषयों को समाहित कर रहा है. मुझे लगता है वो परंपराएं जो अनेक वर्ष हैं, चाहे वो ग्राम परंपरा है, वंश परंपरा है, कुल परंपरा है, ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं
उनको यदि हम स्किल में ले आए, तभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा में और तभी हम विकसित भारत की बात करेंगे, न कि विकसित हम अभी जैसे इंडिया की बात करें तो भारतवर्ष, क्योंकि एक भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व में भारत माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम प्रकृति के संरक्षण में चलते हैं, प्रकृति का शोषण और दोहन नहीं करते, हम उसके पोषण और अपने भविष्य के लिए। सर धन्यवाद। संस्कृत कहता है संस्कृत फॉर ट्रेडिशन, संस्कृत फॉर इनोवेशन, संस्कृत फॉर फ्यूचर। धन्यवाद सर, आपलं शेवटचं असेल आताच्या चर्चेतला। नरेश मडावे, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली। आपण विकसित भारताची संकल्पना करत आहोत 2047 मध्ये, आणि मला असं वाटते की अजूनही भारत खेड्यांचा देश आहे आणि भारतातील या सगळ्या खेड्यांचा शाश्वत विकास झाल्याशिवाय विकसित भारताची संकल्पना आपल्याला करता येणार नाही। त्यासाठी खेड्यांमध्ये संपूर्ण आरोग्याच्या, शिक्षणाच्या ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत आणि सगळ्या क्षेत्रात जर विकास झाला परंतु या ठिकाणी जीवन जगण्यासाठी चांगली हवा मिळाली जर नाही तर त्याला काही अर्थ नसेल। आणि म्हणूनच जल, जंगल, जमीन, निसर्ग ह्या सगळ्या गोष्टी टिकवून ठेवून यांचा बाकी सगळ्या गोष्टींचा ज्यावेळेस शाश्वत विकास होईल त्यावेळेसच खऱ्या अर्थाने 2047 मध्ये मनापासून धन्यवाद। आणि ओपन डिस्कशन आपण इथे वेळेच्या अभावी थांबवतो आहोत। अँड नाउ आपण आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय राज्यपाल आणि मुंबई विद्यापीठासकट सर्व विद्यापीठांचे चांसलर आदरणीय रमेश बैस सर जी को मैं यहाँ पे अनुरोध करता हूँ आदरपूर्वक सर आप हमें संबोधित करें। एक अत्यंत रुजू व्यक्तिमत्व, परंतु सर्वांना सोबत कसं ठेवायचं आणि एक विशिष्ट दिशा कशी द्यायची हे आदरणीय राज्यपाल महोदयांकडून आपल्याला शिकायला मिळतं। विकसित भारत 2047 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक, निजी और अभिमत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुखों की बैठक को संबोधन करने के लिए आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम में जो भाग लिए हैं मुख्यतः श्री हर्षवर्धन पाटिल, मंत्री कुलाधिपति पिंपरी चिचवाड़ यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक, निजी एवं यूनिवर्सिटियों के सम्मानित कुलपति और प्रमुखगण, ऑनलाइन मोड से संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे राज्य के विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और छात्रगण। सबसे पहले मैं आज विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों और प्रमुखों को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल की वजह से आज संभवतः पहली बार महाराष्ट्र के सभी कुलपति और विश्वविद्यालयों के प्रमुख एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका महाराष्ट्र राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है। राज्य के पास कई सदियों से चली आ रही ज्ञान और शिक्षा की समृद्ध विरासत है। यह संत ज्ञानेश्वर की भूमि है। राज्य ने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं को जन्म दिया। आज महाराष्ट्र शिक्षा का एक अग्रणी केंद्र है और कई शीर्ष पायदान के विश्वविद्यालयों और उत्कृष्ट केंद्रों का घर है। के अलावा महाराष्ट्र में आईआईटी बॉम्बे, IIM इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज,
नीरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, VJTI जैसे उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं हूं कि आपके बीच इस मंच के माध्यम से निरंतर संवाद बना रहा हूं। हम सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा एक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लगभग 76 वर्षों तक हमने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाई थी जिसने नए विचारों, नवीन विचारों, उद्यम और जोखिम लेने को हतोत्साहित करती थी। पहली बार हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की है, जो नए विचारों, नवाचार को बढ़ावा देती है। मैं आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मॉडल कार्यान्वयन के बेंचमार्क बनाने की अपील करूंगा। प्रिय कुलपतियों और संस्थान के प्रमुखों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों का राष्ट्र विकास के साथ जिन देशों को विकसित देश माना जाता है, वहां दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं। वास्तव में मैं कहूंगा वे देश महान राष्ट्र हैं क्योंकि उनके पास शीर्ष श्रेणी के विश्वविद्यालय और गतिशील शोध संस्थान हैं। दुनिया के 50 शीर्ष विश्वविद्यालयों में से अकेले अमेरिका में 17 विश्वविद्यालय हैं, जबकि ब्रिटेन में 6, हांगकांग में 4, ऑस्ट्रेलिया में 5 विश्वविद्यालय हैं। फ्रांस, जर्मनी, चीन, कनाडा में भी शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। आज ये विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से हमारे सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली छात्र अपने परिसरों में आकर्षित कर रहे हैं। उन देशों के उद्योग संस्थान हमारे छात्रों को अपने देशों में बनाए रख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हमारे देश का प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रोन हो रहा है। आप वास्तव देखो, दुनिया की शीर्ष अकाउंटिंग फर्म अमेरिकी है, दुनिया की टॉप बिजनेस मैनेजमेंट फर्म अमेरिकी है, शीर्ष कला और डिजाइन संस्थान या तो यूके, यूएसए या अन्य देश में है। इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि हमें अपने संस्थानों का अनुसंधान संस्थान हो या प्रोफेशनल हो, अधिकांश आईवी लीग यूनिवर्सिटी या तो एक विशाल कॉर्पस फंड होता है या उसके बड़े उद्योग अनुसंधान और विकास के लिए धन की निरंतर आपूर्ति करते हैं। इन संस्थानों को बनाए रखने में पूर्व छात्रों, एलुमनाई का दान भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हम अपने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सभी पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय विकास के पूर्व शर्त विकसित विश्वविद्यालय तथा विकसित स्कूल्स हैं। विश्वविद्यालय विकसित नहीं बन सकते जब तक उनके पास शीर्ष श्रेणी और योग्य फैकल्टीज नहीं होंगे। आज की तारीख में हमारे कई विश्वविद्यालय मात्र 50% संकाय के साथ काम कर रहे हैं, बाकी तदर्थ एडहॉक संकाय है। हमें रिक्त संकाय पदों को भरने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। छात्रों द्वारा संकाय सदस्यों का मूल्यांकन भी आवश्यक होना चाहिए। छात्रों द्वारा संकाय का मूल्यांकन संकाय को छात्रों के प्रति अधिक जवाब, राष्ट्र का विकास सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था के सभी 3 प्रमुख क्षेत्रों के विकास से जुड़ा हुआ है, अर्थात कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। हमारी लगभग 50% से अधिक आबादी आज भी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध उद्योगों पर निर्भर है। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में हो रहे अनुसंधान को विपणन योग्य उत्पादों और सेवाओं में बदलने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। विश्व के सबसे
युवा राष्ट्र के रूप में भारत के पास मानव संसाधनों के विशाल भंडार का उल्लेखनीय लाभ है। डिविडेंड हमारे व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थानों को मानव संसाधनों के इस विशाल समूह को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुनिया के कई देश, विशेष रूप से जर्मनी, जापान, इटली जैसे उम्र दराज हो रहे देश कुशल जनशक्ति की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। कुशल श्रमिकों की कमी अब उद्योग विशिष्ट नहीं रह गई है। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर, रेल ट्रैफिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की मांग है। उन्हें शिक्षा कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा संकट बुजुर्गों और नर्सिंग देखभाल कर्मियों का अभाव है। जबकि हमारे संस्थानों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को लक्षित करना चाहिए, हम उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। ऐसे 70% की अधिक युवा समुदाय की और अनदेखी नहीं कर सकते। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अपनी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए ऊर्जा, अन्न और पानी में आत्मनिर्भर बनना होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का उपयोग करके टीबी जैसे पुरानी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह समाधान हमारे विश्वविद्यालयों के कैंपस के माध्यम से आ सकता है। हाल के वर्षों में हमने एशियाई खेलों में प्रदर्शन, जन धन खाते, डेबिट टीकों का विकास, चंद्रयान मिशन, टीबी पर नियंत्रण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसी कई सफलता की कहानियां लिखी है। भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी से वैश्विक स्तर पर छवि बनी। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। जापान, जर्मन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश भारत के लिए सही समय यहां और अभी है। मैं सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने में पुरजोर प्रयास करने का आह्वान करूंगा। मैं इस विचार मंथन में भाग लेने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों के प्रमुखों को धन्यवाद देता हूं और आने वाले वर्षों में इस तरह की और अधिक गतिविधियां आशा करता हूं। आज इस जितने भी कार्यक्रम हुए, पैनल डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई। हम खाली बोलते रहे और कुछ करें नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यहां पर जैसे ही आया, मैंने अपने कुलपतियों का मैंने बैठक लिया और हम एसी चेंबर में बैठकर आदेश देना नहीं है, उनको फील्ड में जाना पड़ेगा। हम जब तक गांव से नहीं जुड़ेंगे, गांव की समस्याओं को हम नहीं जानेंगे, तो हम खाली बच्चों को पढ़ाते रहे इतने में हम सीमित नहीं रह सकते। जब देश चहुमुखी विकास करेगा तभी हम विकास के रास्ते में जाएंगे। कृषि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि अन्न के मामला में हम आत्मनिर्भर बने हैं। जब एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, किया था कि देश में खाद्यान्न पदार्थ की कमी है, हमको एक समय खाना बंद कर देना चाहिए और अपने घरों के बागवानी में भी सब्जी उगाना चाहिए। हरित क्रांति का आह्वान किया
और पूरे देश ने उस हरित क्रांति की आवाज को सुनकर उन्होंने अपना काम किया और देश में अन्न संकट समाप्त हो गया। आज हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूध के मामला में भी हम विश्व में सबसे आगे हैं। श्वेत क्रांति देश में आया। हमारा देश, हमारे देश की जनता देश के लिए समर्पित है। सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कई लोग कभी कभी हंसी मजाक करते थे कि अपने घर में दीपक जलाइए, घंटी बजाइए। ये कोई हंसी खेल नहीं था। प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस विकट समय में देश की सारी जनता को हम जोड़ कर रखें। जब हमारे कोई नेता उसको स्वीकार करती है। एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक गांव में एक साधु गया। तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ते गया। लोग बहुत पब्लिसिटी करते गए कि ये जो महात्मा आए हैं बहुत पहुंचे हुए हैं। एक किसान का लड़का गुड़ बहुत खाता था। किसान उससे परेशान था तो वो कहा कि चलो ये महात्मा जी को पूछे कि अब मेरा बेटा गुड़ खाना, मीठा खाना बंद कैसे करेगा। किसान अपने पुत्र को लेकर उस महात्मा के पास गए। उन्होंने महात्मा से कहा कि ये मेरा बेटा जो है ये गुड़ मीठा बहुत खाता है, इसको कैसे बंद कराएं? आप ही कुछ इसको बताइए। महात्मा ने कहा कि आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन के बाद किसान अपने बेटे को लेकर फिर महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने लड़के के कान में कुछ बातें कही और बोला कि आप अपने बेटे को ले जाओ, अब गुड़ नहीं खाएगा। किसान अपने बेटे को लेकर घर चला गया। 3-4 दिन तक देखा, वास्तव में लड़का गुड़ खाना बंद कर दिया। किसान से रहा नहीं गया। और कहा, गुरुजी जो बातें आपने अभी का बाद में कहा, अगर उसको जब हम पहले बार गए उसी समय अगर कह देते तो उसको पहले ही गुड़ खाना बंद कर देता। तो महात्मा जी ने कहा, जब आप बेटे को लेकर आए थे मैं स्वयं गुड़ खाता था। पहले मैंने गुड़ खाना बंद किया। तो हम खाली भाषण देते रहे, बोलते रहे और हम उसको अमल में नहीं लाए तो हमारी बातों को कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए मेरा सभी कुलपतियों से, सभी संस्थानों से आग्रह है कि हम आने वाले पीढ़ी के भविष्य को हम बनाएं और आप लोग जिस क्षेत्र में काम करेंगे ऐसा ना हो कि एक ही क्षेत्र में सारे यूनिवर्सिटीज काम करते रहें, तो अलग अलग क्षेत्र में भी काम करने के लिए आप लोग रहें। हम नए भारत के निर्माण में सहभागी बने। आज इस कार्यक्रम के बाद अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो या तो विकास भारत @2047 में भी भेज सकते हैं या राजभवन में भेज सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो अच्छी बातें होती है और अचानक कोई बात निकल जाती है, कुछ बोलने का हो जाता है, तो आपके मन में ऐसी बातें आनी चाहिए कि ये सरकार के पास ये बात जानी चाहिए जो देश के विकास के लिए सहयोगी होगा। मैं ऐसे आवेदनों को आमंत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना आइडियाज फॉर विजन विकसित भारत
2047, जिसने आज भारत की युवा शक्ति की इमेजिनेशन को पूरी तरह झकझोर दिया है। यह समुद्र मध्य आज यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के सभी 62 विश्वविद्यालय मौजूद हैं। उनके सभी उनके डेलीगेशंस यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ आने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, आज यहाँ से सर हमने 3701 कॉलेजेस में इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट महाराष्ट्र में किया है, जिसमें 2.5 लाख फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो वेब लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं सब फैकल्टीज का और स्टूडेंट्स का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे अधिक धन्यवाद मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का करती हूँ, जिनके दिशा निर्देश में ये इतना कार्यक्रम अभूत अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम सभी लोग एक विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं यह भी सभी से विनंती करती हूँ कि 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में, जैसा कि हमारी SOP हमारे साथ आपके साथ बांटी जा चुकी है, उसके ऊपर कार्य करें। और जैसा अभी आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बताया है, उसी प्रकार आपके जो भी 2047 के बारे में जो विजन है, उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, वो लिखित स्वरूप में भी हमारे साथ शेयर करें और हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करके निश्चित रूप से नीति आयोग को भेजेंगे। और जो अवार्ड है 10 गुड आइडियाज को, वो महाराष्ट्र को ही वो मान लेना है, तो हम वो मान लेकर रहेंगे। इसी के साथ मैं SNDT, मुंबई यूनिवर्सिटी, YCMOU और पुणे यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम हो पाया है। इसी प्रकार मैं अपने सभी सहकारी का धन्यवाद करती हूँ, श्री मुंगनेकर जी का, श्री कुलकर्णी, श्री आनंदकर और मेरी सारी टीम, जिन्होंने मात्र 3 दिन में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवरों का आभार प्रदर्शन करती हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय की परवानगी से यह कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसी घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। अभी मेरा निवेदन है कि वो फोटोग्राफ के लिए रुके और इसके बाद इट इज फॉलोड बाय लंच, तो कृपया सभी आप लोग बैंक्वेट में लंच के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।